We will continue with the mechanism of enzyme action, and we have discussed in the last module कि हम पहले इसको reaction equilibria and rate of reaction को define करेंगे. So what is the reaction equilibria? The function of a catalyst is to increase the rate of reaction, and catalysts do not affect reaction equilibria. ये जो भी एंजाइम है उसका फंक्शन है कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है. अगर वो स्लो रेट पे है तो उसको 10⁵ टू से लेके 10⁻17 टाइम्स तक रेज कर देता है उसके रेट ऑफ रिएक्शन को. कैसे करेगा वो हम देखेंगे. और इससे लेकिन इसका कोई भी इक्विलिब्रिया के साथ कि एक सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रही है और वापस प्रोडक्ट सबस्ट्रेट बन रही है, उसके साथ एंजाइम जो है उसमें इंटरफियर नहीं करता. कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट द रिएक्शन इक्विलिब्रिया. Any reaction such as the substrate to product and back from product to substrate achieve a particular equilibria can be described by the reaction coordinate diagram. कि ये किस तरह हम इसको reaction coordinate diagram हम देखेंगे next few slides में और define करेंगे कि ये जो है ना reaction coordinate diagram क्या है. और इसी तरह हम उसके साथ ही energies को define करेंगे कि फ्री एनर्जी क्या है, चेंज इन एनर्जी क्या है. क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो देयर इज अ चेंज इन एनर्जी, एंड दिस चेंज इन एनर्जी इज वी विल डिफाइन इट द चेंज इन एनर्जी इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन और इन अ diagrammatic fashion, and we will discuss how many types of energies are present in ongoing reaction which is catalyzed or uncatalyzed by the enzyme or without the enzymes. The free energy of the system is plotted against the progress of the reaction which is from substrate to product. A free energy change को क्योंकि जब भी substrate ने product में convert होना है तो there is a change in energy. इस free energy change को हम plot करेंगे against the progress of the reaction from the substrate to the products. A diagram of this kind is a description of energy change during the reaction. अब इस टाइप्स की डायग्राम जो हम नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में देखेंगे वो डिफाइन करती हैं कि किस तरह की एनर्जी चेंजेस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन में हो रही हैं. The horizontal axis, which is also known as the reaction coordinate, reflects the progressive chemical change कि substrate किस तरह प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है. ये प्रोग्रेसिव केमिकल चेंज को हम जो है ना रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, एंड वी विल प्लॉट इट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. अब ये चेंज क्या है बिटवीन दी व्हेन द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड्स as the S is converted into its product. This is the reaction coordinate diagram for a particular chemical reaction, and we have discussed in the last slide that this reaction coordinate is on the horizontal axis, and on the vertical axis there is a G, which is the free energy change. We can see here that this is the substrate which is having a particular energy having in its molecule. This is known as the ground state or ground state of energy, and this is the transition state which is denoted as the delta G. This double dagger, इसको हम ये जो प्लस प्लस का निशान आपको नजर आ रहा है इसको डबल डैगर या दो खंजर जिस तरह बोलते हैं, डबल डैगर D delta G double dagger, which is the conversion. This is the transition state's energy or energy of activation for the conversion of substrate to the products. And we can see here that the product having a lesser free energy than that of the substrate. The free energy of the system is plotted against the progress of the reaction, that is from substrate to the product. And a diagram of this kind is a description of the energy change during the reaction, and the horizontal axis, as we have discussed, is the
रिएक्शन कोऑर्डिनेट ये हमने यहाँ डिफाइन किया एंड रिफ्लेक्ट्स द प्रोग्रेसिव केमिकल चेंजेस। अब प्रोग्रेसिव केमिकल चेंजेस कौन सी हो रही थी? कन्वर्शन ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। और ये क्यों हो रही है कि सबस्ट्रेट जब भी टूट फूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो देयर इज अ चेंज इन द बॉन्ड ब्रेकेज एंड formation of new bond and breakage of the old bond. So these are the different types of energy which are involved in a reaction catalyzed by the enzyme, and this is not the catalyzed reaction, this is the normal reaction occurring without a catalysis or without a enzyme. The activation energy or G double dagger for the substrate to products and products to substrate, ये हमने बोला था कि ये अगर जो इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस कर रहे हैं कि बोथ वाइज रिएक्शन हो रहा है, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट, हर वक्त कुछ ना कुछ ये रिएक्शन हो रहा होता जाता है until an equilibrium is achieved. So G prime naught G डबल ड्रैगर को हमने डिफाइन किया कि वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो एक ट्रांजिशन स्टेट है जिसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होती है उस टाइम के ऊपर. So this is G double dagger, and G prime naught, this is the G prime naught, is the overall standard free energy change in the direction where substrate is converted into product. अब ये G double dagger को हमने डिफाइन कर दिया. G prime naught क्या है और डेल्टा G जो है G naught क्या है, we will discuss in the next few slides. Delta G is the free energy change. जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है there is a change in a free energy. When a reacting system is not at equilibrium, the tendency to move towards the equilibrium represents a driving force. जब भी कोई जो है ना इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन नहीं है तो उसको जो फोर्सेस डिराइव कर रही हैं towards attaining an equilibrium, these forces required energy, and this is known as the free energy change or the delta G. The magnitude of delta G can be expressed as the free energy change or of the reaction as delta G. अब ये standard free energy क्या होगी? That is the delta G naught. अब delta G क्या थी कि किसी भी रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम की तरफ अचीव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज दी डेल्टा जी. डेल्टा जी नॉट क्या है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर हम किसी रिएक्शन को दे देते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है और एक पर्टिकुलर जो है ना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दे देते हैं, और इन केस ऑफ गैसेस एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देते हैं, तो उन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो एनर्जी यूज होगी दैट इज नोन एज डेल्टा जी नॉट. Under standard conditions, that is 25 degree centigrade or 298 degree K is the standard conditions. We will define these as standard condition when the reactants and the products are initially present at a concentration of 1 mole. 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं, और सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट्स का जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स का या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का जो कंसंट्रेशन है इनिशियली दैट इज 1 मोल, एंड इफ द रिएक्शन इज बिटवीन द गैसेस द प्रेशर इज एट पार्शियल प्रेशर इज 101.3 kilopascal which is equal to 1 atmospheric pressure. The forces deriving the system towards equilibrium is defined as the standard free energy change, that is the delta G naught. इसको हमने पिछली स्लाइड में डिफाइन किया. However, because the conditions in the body systems are different from the standard conditions, energy in biological systems is described in terms of delta G prime naught. अब हमने 3 किस्म की एनर्जीज को डिफाइन कर दिया. एक G डबल डैगर था, सेकंड इज द डेल्टा G नॉट के स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने दे दी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया टेम्परेचर, एंड हमने उसको जो है ना 1 मोलर जो है ना कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट्स एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन. उसमें जो एनर्जी चेंज आएगी उसको इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाते हुए दैट इज डेल्टा G नॉट.
लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशंस बायोलॉजिकल सिस्टम में नहीं है। से ह्यूमन बॉडी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं है, ह्यूमन बॉडी में 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। सिमिलरली वहाँ हमने डिफाइन किया था कि 1 मोल होना चाहिए इनिशियली, तो बहुत सारी जो रिएक्शंस बॉडी में हो रहे हैं वो लेस देन 1 मोल, इवन नैनो मोल्स में हो रहे हैं। सो उस टाइम पे जो एनर्जी यूज हो रही है इन द लिविंग सिस्टम और बायोलॉजिकल सिस्टम which are not standardized as per our definition, which is 25 degrees centigrade and 1 molar concentration of substrate and products at the start of the reaction, then ये कंडीशंस अगर नहीं है बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रही हैं, उसको हम डेल्टा जी नॉट की बजाय डेल्टा जी प्राइम नॉट के साथ डिनोट करते हैं।